screen. Hmm. Okay, so now we'll study about continuity and differentiability. Okay, so this is our next chapter and coming on the calculus. तो आज हम कैलकुलस शुरू करने वाले हैं और ट्राई करेंगे कि जितना हो सके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म कर देंगे. ठीक है. ओके, सो देखते हैं कि सिलेबस में क्या है. आज इट इज विल सी. ओके, समथिंग इज मिसिंग. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और बाकी बाकी सारे जो है वो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, so we are starting calculus today. Okay, so first we'll have some basic idea of limits. हालांकि ये हमारे चैप्टर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, but this is very basic idea to start with continuity and differentiability. So we'll just take a look and then we'll move ahead. Okay. Okay. So what is the basic idea of yours about limits? क्या पता है? Limits या फिर neighborhoods. What do you know about that? Yes, anyone? Any idea? Let's suppose I will say x is equals to 5. That means x, I'll take a lumber line and let's suppose it's my x is equals to 5. But if I say x is approaching to 5, then x is approaching 5, then here I have my 5. Where does x belong to? Is x belongs to 5? क्या मेरा x 5 के साथ समान है? Is it equal? Can it be? Yes, sir. No, sir. It can be? No, sir. Yes. So whenever my x is approaching to 5, so it is not exactly equals to 5. Either it is very less or very very less to it and smaller nearly to it. Okay. So it will be in the neighborhood of 5. Okay. So 5 के आसपास आएंगे ऐसे कुछ. ठीक है. So my x can be here, 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 or here, 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 but it cannot be exactly equals to 5. Okay, so 5 is not exactly equals to 5. Okay, so we're approaching from some directions, from the left side either or from the right hand side. Clear? So when I was saying that x is tending to 5, so x may be equals to 4.99999 or x equals to 5.000001. Okay, so in the neighborhood it will lie. Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Okay. Take it. So if we're approaching x from the left side, okay, if we're approaching the x from the left side, we said LHL, and if we're approaching x or my point A from the right side, we say right hand limit RHL. Okay, so we have LHL and RHL. That is left hand limit and right hand limit. Okay, so if we're approaching, let's suppose this is my number line and I have a point A over here. This is my neighborhood. If I'm going from this side, so it is called as left hand limit. And if I'm approaching from here, this is my RHL, that is right hand limit. Okay, fine. Now let's suppose I give you if f of x is equals to x square. Okay, and so what is the value of x? Value of x or f of x is equals to 5. If then f of x will be 25. f of x will be 25. Good. It will be 25. Fine. But if I say my x is approaching to 5, then
Tell me, if x is approaching to 5, then what will happen to f of x? It will also approach to 25. Okay. If my x is approaching to 5, so f of x will be approaching to 25. Okay. In other terms, how will I write? I can write it like limit of f of x when x tending to 5, f of x tending to 25. Okay. इसको हम ऐसे करते हैं. Fine. Let's say an example from the LHL. From the LHL. Okay. So let us suppose my x is 4.9. Okay. Then what will happen to f of x? कितना आएगा? How much will be f of x? That is 49 का square. That is 24.9. ठीक है. Similarly, अगर मैं लेता हूँ x is equals to 4.99. Okay. Then f of x will be 4.99 का whole square. That is 24.99. Okay. So again, if I take 4.999, that is more closer to 5, then f of x will be 4.999 का whole square. That is 24.999. Okay. अगर मैं ऐसे और क्लोजर 5 के पास लेते लो, like if I take the value of x very nearer to 5, the value of f of x will be very near to 25, but it will not be equals to 25. Clear? Are you getting it? Yes, sir. Are you getting it? Yes, sir. Okay, okay, okay. अगर स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है तो बोल सकते हो कि सर थोड़ा सा धीरे बढ़ाइए. ओके, गो अकॉर्डिंगली. राइट. सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ आर एच एल से, अगर मैं आर एच एल से लेता हूँ आर एच एल से, सो इफ आई हैव एफ ऑफ एक्स 5.01 कितना आएगा? 25.01. एफ ऑफ 5.001 कितना आएगा? 25.001. एफ ऑफ 5.0001 कितना आएगा ना? 25.001. मतलब कि मेरा वैल्यू जो है वो 25 के वेरी नियर है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 25. हो गया ना क्लियर? So I say that when my x is approaching to 5, then my f of x is also approaching to 25, but not exactly equals to 25. Okay, clear? Clear बच्चों? Done? Okay, good, good. ठीक है, fine. अब yes, yes. ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. So we'll say this as generally we say when limit of x tends to a, अगर एक नंबर की तरफ अप्रोच करा x तो कितना आएगा ना? f of x will tend to my f of a. Okay, f of x will tend to f of a. Okay, so this is my limiting value. Clear? Okay. I don't want the class to be like a YouTube lecture, so please do interact with me. सर पूछो कि सर यहाँ कैसे हुआ, ये कैसा हुआ. You can ask me. Okay, clear? Yes, sir.
आपको फाइव ठीक। चलो अब देखते हैं कि now tell me when limit will exist. My question is when limit will exist. बताओ when can my limit exist? What is the condition for एक लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन होता है? बताओ राहुल, स्वस्तिक, मनीषा बताओ। 12th में ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है, बताओ। फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। हाँ, फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। गुड, सो हैव विल हैव ए कंटिन्यूअस ग्राफ। ग्राफ ठीक है, करेक्ट। तो एक कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, उसके लिए क्या होना जरूरी है कि हमारा जो एल एच एल है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो राइट हैंड लिमिट के साथ बराबर आना चाहिए। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट। ओके, क्लियर? अगर हमारा एलएचएल निकाला मैंने, लेट्स सपोज यहाँ वाला, ये जो एलएचएल है मेरा, इफ दिस इज इक्वल्स टू माय आरएचएल, देन द लिमिट विल एग्जिस्ट, और एल्स लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, फिर देखिए मतलब एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल आई विल टेक, माय फंक्शन इज लेट्स सपोज 10 when x is greater than equal to 5 and it is 3 when x is less than 5। ठीक है, सो ये मेरा एक फंक्शन गिवन है। सो चेक इफ लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ओके, कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे क्या ना, ग्राफिकल मेथड। ओके, सो देखते हैं मतलब ग्राफ से कैसा आता है। सपोज आई विल ड्रॉ ए ग्राफ ओवर हियर। ओके, सो माय एक्स एक्सिस, माय वाई एक्सिस। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन क्या है ना हमारा, 5 के पॉइंट, फॉर पॉइंट 5। ठीक है, लेट सपोज मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर 5, जिसमें पॉइंट 5। अगर अगर मेरा कोई भी पॉइंट बिफोर 5 है तो वो उसका वैल्यू कितना आएगा? इफ आई हैव अ पॉइंट 5 बिफोर इट, तो वैल्यू कितना आएगा? 10। 10 आएगा, बिफोर नॉट आफ्टर। तो 3 आएगा सर, सॉरी। अगर कोई भी वैल्यू 5 से लेस से कितना आएगा? 3 आएगा, यस 3 आएगा। ठीक है, तो फॉर एवरी वैल्यू बिफोर 5 विल हैव वैल्यू एज 3। ओके, 1 सेकंड, आई विल जस्ट मेक इट स्ट्रेट। ओके, सो इसके लिए हमारा कितना वैल्यू आएगा ना, यहाँ पर लेट्स सपोज 3 है। ठीक है, तो जितने वैल्यू आएंगे तो यहाँ पर 3 के बराबर आएंगे, है ना, लाइक दिस। अब पॉइंट 5 पे कितना है? पॉइंट 5 पे कितना है? 10। पॉइंट 5 एंड उसके बाद कितना आएगा? 10। 10 आएगा, करेक्ट। सो आई टेक लेट्स सपोज इसमें 10 पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। सो ऐसा है ग्राफ। So this is my solid graph, solid point, and this is my empty point. Okay, this is my empty like here. Okay, अब बताओ ये जो ग्राफ है मेरा पूरा, is this continuous और discontinuous? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस सर। Discontinuous, okay, discontinuous ग्राफ, करेक्ट। ठीक है, तो मेरे को बताओ यहाँ पर हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? नो Will the सर। limit exist here? नो सर। No sir. Why? Why not sir? Why no? Any reason? पहले चल इक्वल टू आर चल नहीं हो। नहीं, यस, अगर हम एलएचएल लेते हैं
और एनी वैल्यू बिफोर एल, लेट्स सपोज मैं यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट से, ठीक है, तो एन एच कितना आएगा, 3 आएगा। और एनी वैल्यू बिफोर 5 वी हैव 3 वैल्यू एल एच एल। लेकिन एल एच एल का जो हो गया 3 हो गया, 5 के बाद तो आर एच एल होगा, वो कितना आएगा, एनी वैल्यू आफ्टर 5 कितना आएगा, 10 आ रहा क्या है है सर? ना, तो आर एच एल 10 आ गया। सो हमारा यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। सो ये हमारा जो ग्राफ है उसमें और ये जो फंक्शन है उसमें हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। Am I clear? So limit does not exist. Clear? Rahul, Swastik, Monisha. Clear? Okay, good. Fine. तो फाइन, ये हो गया। देन एक पॉइंट को हमको रिमेम्बर करना है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और उसका अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो हमारा उसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगा। ओके, इफ लिमिट डज नॉट exist, then the function is discontinuous. ओके, अगर मेरे पास जो फंक्शन है उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो आई कैन नॉट फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ। क्लियर? ओके, सो इसी आइडिया के साथ चलते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है, ठीक है, तो इसी आइडिया के साथ चलते हैं, व्हाट इज कंटिन्यूटी। ओके, सो व्हाट इज कंटिन्यूटी, व्हाट इज द बेसिक आइडिया यू हैव अबाउट कंटिन्यूटी। बताओ कंटिन्यूटी क्या है। मेरा जो ग्राफ होगा इज इट स्मूथ और ब्रेकिंग और व्हाट, कैसा होगा मेरा ग्राफ, कंटिन्यूस होगा या ब्रेक हो जाएगा कुछ भी। एज द नेम सेज कंटिन्यूटी, सो मेरा जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूस ग्राफ होगा, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस, सो माय ग्राफ विल बी कंटिन्यूस लाइक दिस, ठीक है। सो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है। अगर मेरा एक ग्राफ है ऐसे लेट्स सपोज और इसमें एक फंक्शन गिवन लाइक दिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस। ओके, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, उसके बाद ऐसा आ गया कुछ, ठीक है, यहाँ पर एक हमारा गैप है, तो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस। ये हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, हमारा ग्राफ कैसा था ना, ऐसा था, उसके बाद गैप होके यहाँ पर ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस ग्राफ, ठीक है। ओके, सो अभी देखते हैं कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मतलब कंटिन्यूटी कहाँ पर होगा, एक पॉइंट के आसपास। एक पॉइंट है लेट्स सपोज मेरा ए, उसके नेबरहुड में, उसके सराउंडिंग में अगर मेरा ग्राफ कंटिन्यूस होता है, सो आई कैन से दैट द ग्राफ इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। Okay, so let us see what is continued at a point. If a function is continuous at a point, is continuous at a point, at a point, then it is continuous at its neighborhood. Okay, मतलब कि लेट्स सपोज दिस माय एक्स एक्सिस एंड दिस माय एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। मेरे पास एक ग्राफ है लाइक दिस, ओके, और मुझे बोल रहे हैं कि आई हैव लेट्स सपोज ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट है। सो अगर इसके नेबरहुड में ऐसा, ये जो नेबरहुड है कैसा आएगा ना, यहाँ पर इतना और इतना रीजन,
सो इफ माई दिस पर्टिकुलर रीजन इज कंटिन्यूअस, ओके, ये वाला जो ग्राफ है अगर इतना पार्ट कंटिन्यूअस है, देयर इज नो ब्रेकेज, सो आई कैन से दैट दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए. ओके, क्लियर? Okay, sir. क्लियर? ओके, ठीक है. अगर let's suppose we have an example, what I can say, this is my x axis, this is my y axis, like this. Okay, so मेरे पास एक point है, let's suppose this is my 5 and this is like this, and this is 3, this is 7, let's suppose. Is this graph continuous at point P No, sir. or 5? At point 5, is it continuous? No, sir. नहीं सर, ठीक है. Okay, so this is not continuous. Okay, now I'll give you a question. Let's suppose f of x is equals to 7 when x is less than 2, and 7 at x is greater than 2, and 8 at x is equals to 2. So बताओ, is it continuous or discontinuous? Check if it is continuous or discontinuous. बताओ. Discontinuous. Discontinuous. Okay. ठीक है. सो हमारा ग्राफ कैसा आएगा ना, सेम टाइप का आएगा, मतलब एज प्रीवियस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा जो आएगा कितना ना, 2 पर, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट 2. सो बिफोर पॉइंट 2, तो दिस विल बी 7. आफ्टर ऑल्सो इट विल बी 7, बट एट द पॉइंट 2 इसका वैल्यू कितना आ रहा है ना, 8 आ रहा है. ओके, दिस इज 8, दिस इज 7. ठीक है, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है. सो आई कैन आल्सो सी दैट एल एच एस जो है हमारा आर एच एस के बराबर तो है, बट जो उसका वैल्यू है एट द पॉइंट 2, दैट इज नॉट इक्वल, व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2. So I can say that this is discontinuous graph. So discontinuous at point 2. Okay. Similarly, can I say for any point A, okay, अगर इसके इंटरवल में मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस है, so LHS will be RHS, so LHL will be equal to RHL is equals to f of A. Okay, so hashtag if a function f of x is continuous at point A, then what is the condition? What is the condition? क्या है बताओ, क्या आएगा? स्वस्तिक, राहुल, बताओ. अभी तो बताया ना, अगर कंटिन्यूस तो क्या होगा? LHS LHL. equal to RHS. ओके, यहाँ पर LHL, दिस इज नॉट S. यस, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ A आना चाहिए. ठीक है, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ A आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे ही कंटिन्यूस नहीं है तो कैसे बोलेंगे कि पूरा इंटरवल में है ना. यहाँ वजह से लगा, अगर 2 पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूस नहीं है तो क्या आएगा, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना. सो f ऑफ A भी होना चाहिए. तो द कंडीशन इज
LHL will be equals to RHL will be equals to f of a. क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई? Okay, okay, good. Rahul Susti, good. Okay, fine. Okay, so इसको हम एक और तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे ना, हमारा लिमिट LHO कैसे लिखते हैं ना, लिमिट x tends to a minus f of x, this is LHL basically, okay, is equals to RHL कैसे डिनोट करते हैं? RHL is basically limit of x tends to a positive f of x, okay, and of a as it is f of a. So if this condition holds, then we can say that a graph is, or a function is continuous at my point a. Clear? Clear? So Yes, sir. this concept. Okay, fine. So the next concept is algebra of continuous functions. Okay. So what it says now, I have two functions, एक है मेरे पास f और एक है z. Okay. और दोनों के दोनों हमारे continuous functions है at point a. f और एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है जो कि मेरे पॉइंट a पर कंटिन्यूस है. सो आई कैन राइट दैट दोनों का सम जो होगा माइनस भी होगा, वो सारे कंटिन्यूस है. ठीक है. सो f plus g will be continuous. It will be continuous. Okay. अब बताओ कि f minus c क्या होगा? Is it continuous? Continuous, sir. Is it continuous? Continuous. Okay. And f into g? F into g? F into g? Continuous? Yes, sir. And let's suppose I have a constant, let c be a real number, then c into f, is it continuous? Then c into f is continuous. Okay. Last point, that is, if I take f by z, is it continuous? Will it be continuous? If yes, so why? F by z जो होगा, will it be continuous? That is f of a by z of a. Is it continuous? Rahul Swastik, बताओ. Come on. Is it continuous No, sir. or not? No? Why? क्यों नहीं होगा? Okay. So this will also be equals continuous. This will be continuous unless and until z of a is 0. Okay, provided that a of z is not equal to 0. अगर हमारा a of z is not equal to 0 होता है, तभी हमारा ये जो f of a by z of a will be continuous. Because अगर हमारा g of a continuous सॉरी 0 हो गया, तो जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड. हाँ, अनडिफाइंड हो जाएगा. है ना? तो in that case we will not have a continuous function. But whenever f of a by z of a is there, then we can say continuous, provided that z of a is not equals to 0. Okay, fine. ठीक है. तो आपका काम शुरू होता है अभी. I have a question for you guys. If f of x is equals to sine 2x by sine 3x,
when x is not equal to 0, and 2 when x is equal to 0. ठीक है, find if f of x is continuous at x is equal to 0 or not. Try this question. If f of x is given by sine 2x by sine 3x when x is not equal to 0, and 2 when x is equal to 0, then try if it is continuous or discontinuous. Try karo. I'll give you a minute. You try. Okay, voice is not clear. Is it clear now? Hello? Rahul? Clear? Okay. Take it. Yes, sir. Maybe some internet issues. Okay. Okay, अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो. अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो और बताओ, इज इट कंटिन्यूस और नॉट. यस, पहले एलएचसी निकालो, उसके बाद आरएचएल निकालो, देन ट्राई. ओके. Okay. Shall I start or do you need more time? So not continuous. Yes, yes. क्या हुआ? So not continuous होगा. RHL not equal to LHL हो रहा है. RHL not equals to LHL हो रहा है. ओके. ओके फाइन. देखो, सो RHL यहाँ पर कौन सा वाला है, कौन से फंक्शन को लेकर करते हो? यहाँ पर देखो क्या गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू, हमारे पास दो कंडीशन है, आइदर x इज 0 और x इज नॉट 0. दैट मीन्स x इज नॉट 0, सो आइदर इट कैन बी LHL एंड RHL. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, इट कैन बी बोथ LHL एंड RHL बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफाइंग, है ना. सो यहाँ पर LHL और RHL के लिए सेम फंक्शन हम यूज करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सेपरेट LHL और RHL नहीं निकालेंगे. विल ट्राई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f of x. Okay, that will be equals to limit x tends to 0 sin 2x by sin 3x. Okay, अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो. तो क्या होगा ना, लिमिट x tends to 0, what I'll do, I'll take sin 2x
into 2x I'll do, divided by 2x I'll do. Okay. Similarly, यहाँ पर sin 3x के साथ I'll multiply 3x and divide 3x. Okay. Can I do this? Do you agree with me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्योंकि इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ना. हाँ. Yes. Okay. So ना बताओ, अगर मेरे पास x is tending to 0, so 2x will also tend to 0 and 3x will also tend to 0, है ना. So Yes, what sir. I'll do, यहाँ पर क्या करूंगा मैं डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइड से लिखूंगा ऐसे, देन लिमिट ऑफ 2x tending to 0 sin 2x by 2x whole into 2x. Similarly, limit of 3x tending to 0 sin of 3x by 3x into 3x. ओके. सो यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा लिमिट का, द लिमिट Limit x tends to 0, sin x by x nx tends to 1 0. होगा. yes, sin nx by nx हमारा 1 होगा. करेक्ट, गुड. ओके. सो यहाँ पर सेम फॉर्मूला डालेंगे तो कितना आएगा, 1 into 2x by 1 into 3x. ओके. ओके, यहाँ पर लिमिट x tends to 0, लिमिट x tends to 0. ओके. तो कितना आएगा, दैट इज x कैंसिल हो जाएगा, दैट इज विल गेट 2/3, है ना. अभी ट्राई करो f ऑफ a के लिए कितना आएगा, f ऑफ a दैट इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना है, 2 है सर, 2. f ऑफ 0 2 है ना, 2 है. सो दैट इज दिस इज आवर 2. नाउ LHL is equals to RHL, but it is not equals to f of a, so it is discontinuous, hence discontinuous. Okay, clear. One more question. Okay, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो. The question is, so that f of x is given by sin x by x plus cos x when x is less than 0, and it is 2 when x is equals to 0, and 4 into 1 minus 1x का root over divided by x when x is greater than 0. Okay, this is my f of x. f of x is this much. Okay, अब बताओ, is it continuous or not? Is continuous or not? ट्राई करो. ओके. सो यहाँ पर 3 केस गिवन है, ठीक है. When it is less than 0, when it is equals to 0, and one is greater than 0. ट्राई करो. So this will be my LHL, this will be my RHL, and it is f of a. क्लियर है बात. ट्राई करो. फाइंड LHL, RHL and f of a. निकालो. व्हाट डज बी LHL. LHL कैसे निकालते हैं, द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x, that is limit of x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x कितना आएगा, द 0 नेगेटिव मतलब 0 से जो छोटा वाला है x, उसके वाले के लिए कितना है, sin x by x plus cos x. Put it here. Okay. Sin x by x plus
cos x. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और मुझको बताओ कितना आ रहा है. Either you can put x is equals to 0 minus h and x tends to 0, or you can directly do also. Okay, you can put h tends to 0 and x is equals to h minus 0 minus h, where h is very, very small positive number. ठीक है, लाइक 0.000001, मतलब बहुत छोटा वैल्यू है ना. तो अगर इसको किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दूं या फिर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होंगे. लेट्स सपोज आई हैव 0 माइनस प्लस ओके माइनस 0.000001, तो कितना आएगा? वेरी क्लोज टू 0. तो whether I'm adding or subtracting h, that is very small positive number, to any number, the value will remain unchanged but slightly change will be there. है ना? ओके, कितना आएगा बताओ LHL? हाउ मच यू आर गेटिंग LHL? राहुल द लाइक, स्वस्तिक भाई प्रधान, 2. 2 आ रहा है. ओके गुड, yes yes 2, correct. So this will be equals to limit s tends to 0 sine of 0 minus h by minus h, okay, plus cos of minus h, है ना, correct. So now limit of h tends to कितना आएगा? साइन ऑफ 0 माइनस h, दैट इज माइनस h. कितना आएगा? साइन h और प्लस माइनस साइन h. यस 1 आएगा, करेक्ट. दिस इज माइनस साइन h बाई h प्लस cos h, क्योंकि cos ऑफ माइनस x इज cos x. ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर डाल सकते हैं दैट इज लिमिट ऑफ, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव आ जाएगा. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h plus limit of h tends to 0 cos h. So this is 1 plus 1, that is 2. Okay, तो LHL कितना आया ना? 2 आया. अब RHL निकालो. RHL, फाइंड RHL. RHL के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? सेम 2 आ रहा है. ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x. ओके, कौन सा वाला फंक्शन लिया? कौन सा वाला फंक्शन लिया? 4 into 1 minus root over 1 minus x by x. यस करेक्ट, क्योंकि दिस इज 0 प्लस दैट इज पॉजिटिव, मतलब उसके आगे वाला, मतलब ये वाला वैल्यू. ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 4 into 1 minus 1 by x होल स्क्वायर होल रूट बाई x. सो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे सिमिलरली, कैसे करेंगे? 4 by कौन सा 0 फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर? 0 आ रहा है. लिमिट्स x टेंड्स टू पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन मेथड. ठीक है, सो ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 4 बाय x, यहाँ पर हो गया x इंटू 1 माइनस x का रूट ओवर बाय x इंटू क्या करेंगे? 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x. ठीक है, ओके. सो अब देखो, अगर ये वाला जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 4 ऑफ 1 माइनस x 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस x रूट होल स्क्वायर का ऐसा आएगा इंटू x इंटू 1 प्लस
वन प्लस एक्स का रूट ओवर। ओके, ठीक है, गोइंग गुड। सो कितना आएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव 4 × 1 माइनस, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो कितना आएगा ना, 1 - x, क्योंकि रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। देन x × 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 + x। ठीक है, क्लियर। नाउ लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, 4 को एज इट इज। अब इसको देखो, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, दैट इज 1 - 1 + x आएगा, है ना। इसको यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को, तो प्लस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यस x × 1 + 1 + x का रूट ओवर। ओके, दैट इज लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव 4, यहाँ पर क्या होगा ना, +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, सो दैट इज 4x डिवाइडेड बाय x × 1 + 1 + x का रूट ओवर, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। सो नाउ x और x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। ओके, x and x will be cancelled out, that will be equals to limit of x tends to 0 positive 4 by 1 + 1 + x का रूट ओवर। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम जीरो का वैल्यू पुट करेंगे और ऐसे होगा तो कितना आएगा हमारे पास, I'll get 2 4 वाला। by 1 + 1, that is 4 by 2 is equals to 2। यस, करेक्ट। सो अब हमारा क्या है ना, LHL इज इक्वल्स टू RHL हो गया। ठीक है, और f of 0 कितना है, f of 2 0 सर, 2 सर। 2 है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्या आ गया ना, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f of 0। ठीक है ना, तो दिस इज कंटिन्यूस। ओके, क्लियर। यस सर, यस सर, क्लियर सर। क्लियर, अप टू गुड, राइट। जस्ट अ सेकंड। Right. Okay. So, okay. Next question is test unit of f of x at x is equals to 0, at x equal to 0, when f of x given by x mod by x, where x is not equals to 0, and 1 when x is equals to 0. अब ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। यस, यस, I'll give you 1 minute, you try. Okay, अगर नहीं होता तो we'll try both. ठीक है, कंटिन्यूअस है सर। x समान x इक्वल टू 0 1 में Continue, sir. कंटिन्यूअस है सर। Continuously, okay, fine. Swastik, what about you? What do you say? Whatever Rahul is saying, is it correct? Yes, sir. Okay, so both of you say it is continuous. Okay, so then I have to explain. Okay, so अगर हम देख रहे हैं कि mod x का वैल्यू कहीं पर है, so जो mod x है ना, that is equals to x when x is greater than 0। अगर x पॉजिटिव है तो mod x का वैल्यू हमारा x आएगा। ठीक है, अगर हमारा x is less than 0 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, -6 आएगा। -x। That means let's suppose I have -2। ठीक है, -2 का मोड कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे ना, जब मोड उठ के क्या होगा, दिस विल बी माइनस ऑफ -2। ओके, सो इट विल बी 2।
ओके, सो जब कभी हमारे पास x का मॉडुलस है तो उसको हम दो फंक्शन में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली आई हैव f of x here that will be equals to कितना आएगा ना x by x if x is greater than 0, ना if x is less than 0 तो कितना आएगा, माइनस एक्स बाई अगर एक्स x का वैल्यू लेस एक्स देन होगा 0 है तो कितना आएगा, माइनस एक्स बाई एक्स। यस, सो यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 0 है तो 1 होगा, करेक्ट। 1 होगा। अब तो यस सर। दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज -1 एंड दिस इज 1, है ना। तो देखो यहाँ पर आर एच का वैल्यू 1 है, एल एच का -1 है और एफ ऑफ ए का 1 है, करेक्ट। सो इट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, नो नो सर। yes, so it will be discontinuous as LHL is not equals to RHL, so the limit doesn't exist, does not exist, so it is discontinuous. Okay, good to go, समझ में आ गया। अगर कुछ भी क्वेश्चन ऐसा आए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, से कंटिन्यूटी ऑफ कर्व एट द पॉइंट, तो हो जाएगा, नो डाउट्स। सर इसका ग्राफ कैसा होगा? ओके फाइन, तो इसका ग्राफ, ओके, एक +1 पे -1 पे, ओके, ग्राफ है ना, मतलब ग्राफ की उतनी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लेट्स सपोज दिस माय ग्राफ, सो व्हेन x is equals to 0, x is equals to 0, it will be equals to ओके, x equal to 0 मतलब 1 पे आएगा, x equals to 0 पे तो कितना आएगा ना 1 पे आएगा, हो गया, दिस इज x equals to 0। अब अगर मेरा x जो है लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 कितना आ रहा है, -1 पे, है ना, तो इसका जो ग्राफ होगा इसको एक्शन कर लेते हैं, ओके 1 सेकंड, तो दिस इज माय पॉइंट, देन ये ऐसा आएगा और ऐसा स्टेप अप फंक्शन, ठीक है, करेक्ट। दिस इज x ग्रेटर देन 0, दिस इज x लेस देन 0, okay, this is the 1 and -1, this is 0, ठीक है, समझ में आ गया, यस सर। यस नेक्स्ट सर। कॉन्सेप्ट, यस सर। ओके फाइन, ओके, सो नाउ विल सी कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल। आज हमने देखा क्या, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, देन विल सी कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को इंटरवल में करना है, सो कैन आई टेक ईच पॉइंट एंड शो द कंटिन्यूटी, won't that be very much difficult and very rigorous way? अगर मेरे को इस इंटरवल, लेट्स सपोज इस माय नंबर लाइन, और इस इंटरवल में मेरे को देखना है कि ये जो पूरा कर्व है इज इट कंटिन्यूअस और नॉट, सो आई कैन नॉट टेक ईच पॉइंट एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, देयर विल बी नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो हर एक पॉइंट को उठा के मैं तो कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकता, है ना। तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया ना, एक इजी वे निकाला, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया ना, कुछ ऐसे कर्व्स दिए, कुछ ऐसे फंक्शंस दिए जो कि हमेशा हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। कौन से वाले होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट होता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा किसी भी इंटरवल पर हमारा कंटिन्यूस होता है, ठीक है। Okay, can anyone tell me what is the like general term for the polynomials? बताओ, पॉलिनोमियल्स को हम कैसे इग्नोर करते हैं, इसका फॉर्म क्या है? यस, क्लास 9th में पढ़ा हुआ तुमने, यस, क्लास 9th एंड 10th बोथ। बताओ, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है दैट इज p ऑफ x इज गिवन एज a नॉट
plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x to the power 4 dot 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 plus an x to the power n, है ना. दिस इज आवर जनरल टर्म फॉर पॉलिनोमियल. ठीक है, तो जितने भी पॉलिनोमियल्स हमारे पास होंगे वो सारे के सारे एनी इंटरवल में हमारे क्या होंगे ना, कंटिन्यूस होंगे. ओके, क्लियर. Yes, sir. ओके फाइन. सो दो चीज हमारे पास है. एक है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन that is or constant polynomial. Okay, that is f of x is equals to any constant c where c belongs to our real numbers. Okay, and दूसरा है कि हमारे पास that is identity function. Identity function that means f of x is equals to x. ठीक है, ये दोनों भी हमारे पॉलिनोमियल्स के अंडर आते हैं. सो दीज टू आर आल्सो कंटिन्यूअस एट एवरी इंटरवल. कंटिन्यूअस at every interval. ठीक है, क्लियर. चले नेक्स्ट. ओके फाइन. सो नेक्स्ट कैटेगरी होता है हमारा दैट इज साइन एंड कोसाइन फंक्शन के लिए. ओके, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस. ओके, सो साइन का ग्राफ तो आपने देखा होगा. दिस इज माय साइन ग्राफ. ओके ओके, आई विल ट्राई बोथ ऑफ देम इन द सेम ग्राफ. ओके, तो साइन का ग्राफ कहां से आता है, हाउ इज साइन ग्राफ. Zero. हमारा जीरो मतलब यस, तो जीरो से ये ट्रैवल करेगा ऐसे. ओके ओके, ये हमारा साइन का ग्राफ है. कॉस के लिए One से ये कुछ ऐसा होगा लाइक दिस. वन से शुरू होगा, करेक्ट. अरे वाह, अरे ठीक है, ऐसे कुछ आएगा. ठीक है, सो हमारा पॉइंट ऐसे कुछ. ओके ओके, बेटर आई ट्राई एंड बोथ अलग अलग. ठीक है, इसको कर लेता हूँ छोटा. ऐसे कुछ ग्राफ आएगा और इसका इस आएगा. ठीक है, ऐसा हमारा कॉस का ग्राफ होगा. दिस इज फॉर कॉस से cos x, दिस इज फॉर sin x. ठीक है ना. तो इज इट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. तो जितना भी तुम रेंज लगा लो वहां पर हमारा कंटिन्यूअस आने वाला है ना. देयर इज नो ब्रेकेज ओवर हियर. यस, सो साइन और कॉस ग्राफ हमारे क्या होंगे ना, हमेशा हमेशा कंटिन्यूअस होंगे फॉर एवरी इंटरवल. ओके, सो देन द थर्ड वन इज मॉडुलस. मॉडुलस फंक्शन. ओके, सो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा. मॉडुलस फंक्शन का, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस. तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, वी टाइप का. ओके, सो यू कैन आल्सो सी दैट दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस. यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं है ना. तो दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन. Okay, then the next one is fourth one, that is exponential. Exponential function. Okay, can anyone tell me what is the general term you use for exponential. Yes, मॉड्यूलस फंक्शन जीरो में कंटिन्यूअस नहीं होता है. जीरो में नहीं होता. किसने बोला. जीरो में उसका मल्टीपल टेन. वी टाइप का ऐसा आएगा.
जीरो में मल्टीपल टेंजेंट है। नहीं, ये कंटिन्यूस होगा। मॉडुलस फंक्शन इज हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यूस होता है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, देयर इज नो ब्रेकेज। ओके सर। अगर हम जीरो का भी मॉडुलस लेते हैं, जीरो का मॉडुलस कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो आएगा जीरो सर। का मॉडुलस जीरो आएगा ना। हाँ, तो यस उसका सर। कैसे डिस्कंटिन्यूस होगा? नहीं होगा। अगर माइनस वन का लेते हैं तो वन आएगा, वन का लेंगे तो वन आएगा, टू का लेंगे तो टू आएगा, माइनस टू का लेंगे तो टू आएगा ना। तो ऐसे भी हमारा बी के जैसे हमारा कंटिन्यूस होता है, तो देर इज नो ब्रेकेज। जीरो के लिए भी जीरो आएगा। So this is continuous graph. Any doubts now? अगर फिर भी नहीं हुआ तो नो बताओ। सर। यस ओके सर। ओके, क्लियर ना? ओके, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताओ कि एक्सपोनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? हाउ डू वी डिनोट एक्सपोनेंट फंक्शन? वी डिनोट इट बाय a to the power x. ओके, एक्सपोनेंट बोलते हैं ना ऐसे, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम्स। एक्सपोनेंट कैसे लिखते हैं यस ना? सर। a to the power x. ओके, सो यहाँ पे दो कंडीशन है। इफ a is less than zero, then the graph will be like this. A is less than zero, sorry, not less than one, and in between zero, so it will be like this. तो ग्राफ ऐसे कुछ होगा। ओके, मेरा ग्राफ ऐसा आएगा। बट इफ a is greater than one, then जो हमारा ग्राफ आएगा कैसा आएगा? इट विल बी लाइक दिस। हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा चार फंक्शंस हो गए जो कि हमेशा हमेशा किसी भी इंटरवल पर हमारा कंटिन्यूस होगा। हमारा क्लियर? कौन से हो गए ना? पहला होगा हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड हो गया हमारा कौन सा वाला? बताओ। फर्स्ट इज पॉलिनोमियल, सेकंड इज, बताओ। साइन कोसाइन का सर। साइन पॉलिनोमियल, कोसाइन देन साइन कोसाइन फंक्शन। साइन कोसाइन फंक्शन, देन नेक्स्ट। मॉड्यूलस ओके, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल सर। मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये हमारा चार फंक्शन हो गए जो हमेशा हमेशा किसी भी इंटरवल पर कंटिन्यूस होंगे। ठीक है? यस सर। ओके, यस सर। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, ओके, गुड गुड। ठीक है, सो लेट अस सपोज आई हैव ए फंक्शन f of x that is x square plus ax plus b. Okay, and the interval is given as 0 to 2. Okay, is it continuous? Is it continuous? यस सर। यस सर। Is this function यस continuous? सर। यस सर। Yes, good. So similarly, if I have g of x as 3x plus 2 in the interval 2 to x to 2. Okay, what about this? And if I have h of x is equals to 2x plus 5b in the interval 4 to 8. ओके, तीनों के तीनों कंटिन्यूस है क्योंकि तीनों के तीनों पॉलिनोमियल्स है ना। अब यस बताओ, सर। द क्वेश्चन इज gamma of x, yes, yes, f of x plus g of x plus h of x continuous or not? क्या होगा? Is it continuous? Gamma of x, is it continuous in the interval 0, 8? बताओ। कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होगा। ओके, राहुल। यस सर। यस सर। कंटिन्यूस, ओके,
Fine. Let's suppose I have a graph like this. Okay, f of x मेरा this is my f of x. G of x ऐसा है और h of x कुछ let's suppose ऐसा है. So now is it continuous? क्या बोल सकता हूँ? Is it continuous? No, sir. No, right? No, sir. So it is continuous. हाँ. So यहाँ पर जो हमारा गामा ऑफ एक्स होगा, so it may be continuous or may not be continuous. ठीक है ना? We cannot say anything because we do not know about the boundaries. ये हमारा जो 2 पर कर्व ब्रेक हो रहा है और 4 पर जो कर्व ब्रेक हो रहा है, तो इस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है कि नहीं, तो उसके लिए भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है. तो इसीलिए आई कैन नॉट से इट इज कंटिन्यूस और नॉट. ओके, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस. क्लियर? ओके, गुड. सो कंटिन्यूस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है. चलो, दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, एफ, जी और एच. ठीक है ना? नाउ अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नाउ इफ द क्वेश्चन इज if f of x, g of x, g of x and h of x is continuous at 0, 8, then find the value of a and b. ओके, सो यहाँ पर क्या गिवन है कि हमारा जो फंक्शन f, g एंड h है, ओके, वो तीनों का सम दैट इज f of x plus g of x plus h of x दैट इज कंटिन्यूअस इन माय इंटरवल 0, 8 क्लोज इंटरवल. ठीक है, तो अब बताओ कि a और वैल्यू का a और b का वैल्यू कितना होगा. ये हमारा f, g एंड h है, तो बताओ. सो यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से. सो गामा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x square plus ax plus b when x is lying between 0, 2 that and 3x plus 2 when it is lying between 2, 4 and 2x plus 5b when it is lying between x and 8. Now tell if it is continuous. If it is continuous, then what is the value of a and b? Okay. गिवन है कि हमारा गामा ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू. हो जाएगा. ओके, ट्राई करो. सो अप्रोच क्या दे रहे हो? व्हाट आर डूइंग फर्स्ट?
Okay. So I'll start, or you want to type, you want time for trying of your own. Okay. So you do along with me. ठीक है, आप साथ साथ करते रहो. सो अगर मेरा ये जो गामा ऑफ एक्स है दैट इज कंटिन्यूअस इन माय इंटरवल 0,8, सो दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस एट माय पॉइंट 2 एंड 4 आल्सो, है ना. दिस इज माय ग्राफ एंड लेट्स सपोज दिस इज माय फंक्शन. दिस माय ग्राफ, दिस इज फंक्शन लाइक दिस. ठीक है, अगर ये हमारा 0,8 में कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली पॉइंट 2 और पॉइंट 4 में भी ये जो ग्राफ वो कंटिन्यूअस होगा ऑब्वियसली, है ना. सो at x equals to 2, let us find LHL. ठीक है, that will be equals to limit of x tends to 2 minus कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, बताओ. लिमिट The first one. फर्स्ट वन. ओके गुड. सो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, अब यहाँ पर यूज करो, पुट एस इज इक्वल्स टू 0, पुट h tends to 0 and x is equals to 2 minus h. कितना आएगा, लिमिट ऑफ h tends to 0, then 2 minus h का whole square plus a into 2 minus h, okay, plus b, okay. Then putting h equals to 0, we'll have 4 plus 2 into a, that is 2a into h into 0 हो जाएगा plus b. ओके, अब RHS से RHL ट्राई करो. लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 3x प्लस 2, है ना, 2 के बाद आ गया ना, तो ये वाला आएगा. Yes, x sir. is 3 greater plus than 2. 2, so this is 3x plus 2 will use. yes correct. so इसको ट्राई करो, कितना आएगा, put s equals to s tends to 0, वगैरह वगैरह करो, कितना आएगा, put s tends to 0 and x is equals to 2 plus h, कितना आएगा, then limit of s tends to 0, 3 into x कितना आएगा ना, 2 plus h plus 2, that will be equals to 3 into 2 plus 0 plus 2, that will get 8. ठीक है, तो हमारे पास एल एच चला 8 कितना आया, sir. ना, 4 प्लस 2a प्लस b एंड यस 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 करेक्ट. am I correct? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो अब बोल रहे अगर क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच होगा, Yes, sir. एल एच इक्वल टू आर एच होगा. दैट इम्प्लाइज 4 प्लस 2a प्लस b विल बी इक्वल्स टू 8. तो यहाँ पर से 2a प्लस b कितना आएगा ना, 4 आएगा. 4 आया, sir. 2a प्लस b कितना आएगा, 4 आएगा. यस ठीक है, तो यहाँ पर 4 आएगा. दैट मीन्स दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स सपोज बस इक्वेशन 1. ओके, अब सेम ट्राई करो x इज इक्वल्स टू 4 के लिए. एट x इज इक्वल्स टू 4 कितना आएगा, ट्राई करो, LHL निकालो, RHL निकालो और बताओ. LHL will be limit x tends to how much, 4 minus f of x. कौन सा आएगा f of x, 4 प्लस के लिए, 3x plus 2. सो Second 4 one. माइनस के लिए, 4 माइनस कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, 3x plus 2 सेकंड वाला. ओके, तो 3x plus 2, I'll put 3x plus 2, this will be equals to how much,
12 plus 2 that is 14. 14. सिमिलर निकालो RHL के लिए कितना आएगा? ओके 40. यस RHL के लिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 4 प्लस कौन सा फंक्शन आएगा? थर्ड 4 प्लस के लिए 2x plus 5 yes 2x plus 5b. yes correct. so 2x plus 5b. ठीक है. सो यहाँ पर पुट करो कितना आएगा? 8a plus 5b 8a plus 5b. ठीक है. दिस इज माई फॉर x is equals to 4. now again L is equals to RHL. so कितना आएगा? that implies 8a plus 5b is equals to 8a plus 5b equals to 14. okay. 8a plus 5b is equals to 14. so this is my second equation. ठीक है. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो और निकालो कितना a और b का वैल्यू. this is let's me copy. okay. So a is equal to 3 or b is equal to -2. ओके ओके गुड. 1 सेकंड जस्ट कहाँ गए ये वाला क्वेश्चन? हाँ. सो इसको सॉल्व करेंगे कितना ना. मेरे पास इक्वेशन 1 था 2a प्लस b ना. तो इक्वेशन 1 इंटू 4 करेंगे दैट इम्प्लाइज 8a प्लस कितना आएगा? 4b इज इक्वल टू 16. इक्वेशन 2 को एज इट इज रख देंगे इंटू 1 दैट इम्प्लाइज 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14. सो यहाँ पर माइनस 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 get minus b is equals to 2. that implies b is equals to minus 2. ठीक है. this is my b is equals to minus 2. now we have 2a plus b is equals to 4. 2a plus b is equals to 4. that implies 2a plus b कितना है? minus 2 is equals to 4. that implies 2 is equals to 6. a is equals to 3. okay. so कितना आया आंसर आया? Yes sir. a is equals 3 or to -2. 3 and b is equal to -2. okay. therefore a is equals to 3 and b is equals to -2. clear? any doubts here? no sir any questions till now? No sir. okay ठीक है. okay. so next क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे डिफरेंशिएबिलिटी से. ओके. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी. ओके. यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या फिर प्रीवियस चैप्टर से कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो.